but since it is a revision class, so I want you all to be participating. ठीक है, जितना याद है इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करो. ऐसा it should not be a monologue and monthly communication. बताओ, what is recruitment? What do you mean by recruitment? और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है? पूरा रिक्रूटमेंट पढ़ लेते हैं लोग, लेकिन उनको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस ठीक से समझ नहीं आता. इस टाइम में सुनल, Yes, ma'am. रोहित, अदिति, पूरा ये कैमरा. सुनल, टेल मी व्हाट इज रिक्रूटमेंट? मैम रिक्रूटमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉयज ढूंढते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए अपने लिए एम्प्लॉयज ढूंढती है अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन द टैलेंट ऑफ और द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें तो बहुत सोचने की बात नहीं है. तुम लोग इतना क्या सोच रहे हो? रिक्रूटमेंट तो एकदम कॉमन वर्ड है जो सब इधर उधर से सब जगह से सुने होंगे तुम लोग. See, recruitment is a process. It is a process of attracting as many applicants as possible from various sources. Okay, this is known as recruitment. जितने तरीके से आप potential employees को ढूंढ सकते हैं, उनकी pool को collect करना, to collect that pool, to make that pool of employees is known as recruitment. So when you're given a chance to define it, you'll always define it as recruitment is the process of attracting candidates for the purpose of job from as many sources as possible. Okay. Now, recruitment कितने तरीके से होता है? What are the types of recruitment? मैम इंटरनल और एक्सटर्नल. Very good. रिक्रूटमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. जहाँ पे भी रिक्रूटमेंट देखोगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, दो तरीके का रिक्रूटमेंट तुमको देखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए. द फर्स्ट वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, सेकंड वन इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? अंदर से. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विदिन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, then that is known as internal recruitment. See, you are more familiar with recruitment from outside. Why? Because you are still not employed. Okay? Once you get employed, you will understand how important internal recruitment is. Internal recruitment का मतलब hiring people from within the organization is known as internal recruitment. ऑर्गेनाइजेशन में पहले से लोग काम कर रहे हैं, राइट? सपोज करो कि सपोज अ क्लर्क हैज जॉइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सपोज क्लर्क हैज जॉइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट क्लर्क आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर 3 years is getting promoted to assistant manager. ठीक, असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट हो रहा है. दिस इज नोन एज इंटरनल रिक्रूटमेंट. Because is my voice clear? Yes, ma'am. यस मैम, बट थोड़ा स्लो है. See, why I give you an example of bank, because this is the most familiar organization. Okay, as of now, once you are into the market, you will come to know many other organizations as well. Suppose there is a clerk in the organization and he has worked for 3 years. So he has passed the eligibility of having spent the number of years that he needs to spend for getting promoted to assistant manager. A clerk also gets promoted to PO. You know this? और बाहर से भी directly PO पे appoint होते हैं ना लोग, directly PO. और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लर्क भी पीओ प्रमोट होते हैं, राइट? अब तुम ये सोच के देखो कि इफ द कैंडिडेट्स आर हायर्ड फॉर वंस
and they are never promoted. Okay, they're never given a chance of career planning in the organization. They are never shown a career path in the organization. Will they ever be motivated to stay in that organization and work for that organization? बोलो, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हो उसमें तुमको कोई फर्दर स्कोप नहीं दिख रहा है ग्रोथ का, तुम ज्यादा दिन तक वहां काम करोगे क्या? नो मैम, नो मैम. करोगे? So internal recruitment is important, is more important to an organization. Okay. Now, what are the types or what are the methods through which internal recruitment is carried out? ये बताओ तुम लोग. प्रमोशन, एम्प्लॉय रेफरल और मैम ट्रांसफर. Very good. Ex-employees also? यस मैम, एक्स एम्प्लॉय. एम्प्लॉय रेफरल का नाम तो पता है तुम लोग, लेकिन हमको ये बताओ, पहले हम तुमको समझा देते हैं फिर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे. इंटरनल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज क्या होता है बताओ, तुम लोग सोच के बताओ, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, सो आई वुड वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट. यस मैम, इसका फायदा ये है कि मैम वहाँ पे कंपनी सेफ रहता है. किसी भी एम्प्लॉय को अगर हायर करता है इंटरनल रिक्रूटमेंट से, तो वहाँ पे उसको ये रहेगा कि काम सही से करेगा, एक उसके ऊपर ये लायबिलिटी रहेगा और चोरी वोरी करके नहीं भागेगा. Why do you say this? क्योंकि मैम वहाँ पे तो एक पहले से उसका रिलेटेड जैसे रेफरल हुआ, एम्प्लॉय रेफरल. ये नहीं, एम्प्लॉय कि हम रेफरल किस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली में वर्क अलग कर रहे वर्ड होता है आदित्य. डोंट मिक्स इट अप विद अदर थिंग्स. Okay, I'll give you an example and make you clear what is employee referral. इंटरनल रिक्रूटमेंट अभी हम तुमको एक्सप्लेन किए ना कि सपोज करो कि तुम ही किसी बैंक में तुम्हारा कल को सिलेक्शन हो जाता है और तुमको आगे कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है, तुम डिमोटिवेटेड हो जाओगे. सो जस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी होगा क्या, जब तुमको इंटरनली रिक्रूट किया जाता है ऊपर, तो क्या होता है, एडवांटेज क्या होगा इसका, दैट यू विल फील मोर मोटिवेटेड, राइट? योर मोरल विल इंप्रूव, right? You will feel enthusiastic, you will feel more motivated. Why? Because you think that since I have worked for this organization, so this organization has thought about me. सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये एम्प्लॉय की मोरल को बहुत इम्प्रूव करता है, और दूसरी चीज कि ये बहुत कम कॉस्टली होता है. दिस इज लेस एक्सपेंसिव मेथड दैन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. You understand this now? See, if IBPS wants to conduct an exam for a bank PO, okay, it has to go through a whole lot of procedure to announce a date for conducting exam, to set up the online exam centers, to set up all those personnel of every rank to conduct that exam successfully. Once they are done with that process, then they'll filter out those applications or OMR sheets, and then they'll filter out all those people who have not been able to make through the mains exams. Once again the same setup, again the same procedure, then after mains interview, document verification, a board will be set up at different regions. This is a very long process and this is very expensive. Okay, there's nothing of this sort in internal exam. Simply a notice on the notice board announcing on so and so date we're going to conduct an exam for internal recruitment or interview or whichever is the means of getting the employees promoted. So it is less costly, it is less time taking, there is an improve in morale of the employees, okay, which is not there in case of external recruitment. But ये तो एडवांटेज की बात हो गई. Can you give me some points regarding the disadvantages? मैम फ्रेश स्किल को ऑप्शन नहीं मिल पाता. Very good. Fresh skill को ऑप्शन नहीं मिल पाता है. Second, सोच के देखो. क्या बायसनेस होने का चांस नहीं है? होगा मैम. सारे लोग जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं
ये तो वही वाली बात हुई कि किसी टीचर का कोई स्टूडेंट फेवरेट हो गया तो उसका असाइनमेंट अगर थोड़ा इधर उधर भी है तो फिर मार्क्स फिर भी मैम दे देंगे, उसको जहाँ एग्जाम्प्ट करना है उसको मैम बायस होकर के दे देंगे marks. Okay, same thing happens in the organization also. Office politics बहुत ज़्यादा होती है. This politics is based upon a number of factors. हम लोग कितना भी चीज़ों को ideal consider करने की कोशिश करें, but on the ground level this is not the case. Then office politics depends upon a lot of factors like your regionalism, your casteism, gender biasing, and your own personal prejudices also. Okay, so this heartburn is a very important factor that is coming up in internal recruitment. So this is the disadvantage of internal. दूसरी बात, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम हो रहा है वैसे ही होता चला जाएगा तो शायद आप एक्सटर्नल चेंजेस को केटर नहीं कर पाएंगे चेंज के लिए. Okay, you need fresh skills, you need fresh talent, you need fresh blood to work in a new manner which is rather more effective. Okay, now this was about internal recruitment. Let's move on to external recruitment. What is external recruitment and types? Examples. Tell me. मैम एडवर्टाइजमेंट. No, first tell me what is external recruitment. Okay. ये तो सबसे सिंपल है, इसमें क्या सोचना है तुम लोग को. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, अभी रिक्रूटमेंट समझा दिए, फिर एक्सटर्नल बताओ क्या होता है. When internal is from within the organization, external is from Outside from the organization. इसमें इतना क्या सोचना है. Recruitment which takes place from outside the organization is known as external recruitment. अब ये बताइए कि external recruitment में आप लोग क्या क्या जानते हैं. Then I'll add some more in that. External recruitment examples. मैम वॉकिंग इंटरव्यू. Walk-in interview. Okay, and मैम ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव एडवर्टाइजमेंट फॉर द advertisement. Good. And कैंपस सिलेक्शन. campus selection. Very good. Being a student, you should have said it first. Campus selection, walk-in interview, and advertisement. Yes, ma'am. And Rohit, Aditya, Anurag, and Krishna, don't sit dormant in class. Please participate. Maximum, what will happen? You'll end up giving an incorrect answer. That's how you learn. You learn more from interaction than from merely reading from the book. You'll remember this discussion. Tell me. So, campus selection and Krishna, if you're unable to unmute, will you kindly unjoin and then rejoin? अच्छा इसीलिए तुम join rejoin कर रहे हो क्या? But I have not muted you. There's some kind of glitch, I guess. और बताइए जल्दी जल्दी. Walk-in interview, advertisement, and you people are PGDM students. Okay, one minute. Let me tell you one thing. There is a difference between graduation students and post-graduation students. Post-graduation students are not supposed to be spoon-fed. Please remember this. You should get into a habit of making running notes. Okay? Please note down what you think is important or what you think can add up to your answer. Hello. Okay. Ma'am, factory gate. Recruitment at factory gate. What is factory gate, Aditya? Consultancy. Consultancy. Good. And देखो बताते हैं. Okay. Deputation. Deputation.
एडवर्टीजमेंट ये समझ में आता है, जैसे कि किस कोई भी, जैसे बीपीएससी अपना रिक्रूटमेंट निकालेगी तो एडवर्टीजमेंट देती है वो, कोई भी पीएसयू अपना रिक्रूटमेंट निकालती है तो एक एडवर्टीजमेंट नंबर होता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू निकालती है। ओके, वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू का क्या मतलब होता है? जस्ट यू वॉक इन दैट ग्राउंड, appear for your interview, okay, and then get selected. Walk in interview, right? Mostly for walk in interview, the advertisements can be seen in the newspaper, like that. Okay, then the other thing is कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी आपको थोड़ा डीपली जानना चाहिए, इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज को हेड हंटर्स भी बोला जाता है। देयर आर सम वेरी बिग कंसल्टेंसीज इन द वर्ल्ड व्हिच डू द वर्क ऑफ मैचिंग द स्किल सेट। ओके, तुम्हारे पास जो स्किल सेट है उसकी सीवी बना के उसका इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी को चला जाता है तुम्हारे थ्रू, ऑफ कोर्स। एंड देन देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो व्हिच पुट देयर रिक्वायरमेंट in that consultancy. As soon as the demand and supply matches, they'll inform you to go and appear for the interview. Let me tell you, there are some very big consultancies in the world that hire only the best people. Okay, the best and the most learned from the topmost B schools of the world. वो भी recruitment इसी तरीके से करती है। Okay, then you have recruitment at factory gate. आदित्य ने बोला फैक्ट्री गेट, क्या होता है फैक्ट्री गेट? मैम फैक्ट्री के गेट पे एडवर्टाइजिंग डाला जाता है। और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्या मतलब? कॉन्सेप्ट ये होता है मैम कि बाहर के जो भी एम्प्लॉय अगर चाहें, बाहर के जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सके, इसलिए उसको पब्लिकली किया जाता है। किस तरीके के एम्प्लॉयज के लिए किया जाता है? मैम ये होता है ना कि उसमें जो वर्किंग एम्प्लॉय है वो इस नोटिस को देख सके कि क्या रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। नहीं, अब कॉन्सेप्ट सुधारो। अब तक रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री गेट का मतलब फैक्ट्री के गेट से रिक्रूटमेंट। दिस इज नोन एज फैक्ट्री रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? देखो, तुम लोग को पहले भी एग्जांपल देके समझाए हैं, भूल गए हो तो। कभी कभी क्या होता है कि जब अनस्किल्ड वर्कर्स हम लोग को लेना होता है ना, सिलेक्शन कराते वक्त आई टोल्ड यू सिलेक्शन का प्रोसेस डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए तुम सिलेक्शन कर रहे हो, है ना? यू कैन नॉट हैव द सेम प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन फॉर अ क्लर्क एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स द स्टेप्स विल वैरी। तो फैक्ट्री गेट के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्टली जो नोटिस होता है वो फैक्ट्री के गेट पे ही लगा दिया जाता है। जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स होता है, गाड़ी चलाने वाला, माली, ये सब में बहुत दिमाग नहीं लगता है, इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, या फिर वैसे लेबर्स जिनको शिपर उठाना है, या जिसमें बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत नहीं है, वैसे एम्प्लॉइज को इस मेथड से लिया जाता है। और सुनो, देखो अभी पीक टाइम है हिल स्टेशंस का, है ना? गर्मी बहुत हो रही है, तो अभी उत्तराखंड में या कश्मीर में या फॉर दैट मैटर नॉर्थ ईस्ट में लोग घूमने फिरने के लिए जाएंगे। इस टाइम पे हिमाचल में टूरिस्ट रश बहुत ज्यादा होता है ना? होता है ना, टूरिस्ट रश बहुत ज्यादा होता है। जब टूरिस्ट रश बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? यू विल नीड मोर लेबर्स फॉर मेंटेनिंग cleanliness of the hotels, more laborers in terms of chauffeurs, drivers, more laborers in terms of catering to the room service, more laborers to serve for the flood of people coming to the hotels, restaurant. समझ में आया? होता है उस टाइम पे क्या होता है कि ये पीक सीजन चला जाएगा, फिर तो लोगों का रश कम हो जाएगा ना? So in that case, what happens is that इस तरीके से रिक्रूटमेंट किया जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है उन लोगों से कि भाई जब खत्म हो जाएगा रश, देन वी विल फायर यू, और वो लोग भी अग्री करते हैं इस बात से। तो ये थोड़ा सा टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट टाइप का चीज होता है। ओके, समझ में आया? एडवांटेज बताओ। इंटरनल रिक्रूटमेंट का तो हम लोग कर लिए, एक्सटर्नल का एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं।
फ्रेश टैलेंट को मौका मिलता है मैम। ठीक है। And इसका ड्रॉबैक है कि मैम ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। and time consuming होता है। यस मैम। ठीक है। मैम कॉम्पिटिटिव होता है, स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, यस मैम, एक्सटर्नल का। हाँ कॉम्पिटिटिव होगा, बस क्योंकि ये ज्यादा चांसेस है कि आप ज्यादा बेहतर टैलेंट लेकर के आ सकते हैं। यस ठीक, अब ये बताओ, अभी तक समझ में आया क्लास में रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, समझ में आया? बिना बुक पढ़े भी रिक्रूटमेंट के बारे में लिख सकते हो आप। यस मैम। इंटरनल रिक्रूटमेंट में एक पॉइंट छूटा था, एम्प्लॉय रेफरल, क्या होता है? एम्प्लॉय रेफरल एक्चुअली मैम ये एम्प्लॉय का रेफर से कोई ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और कुछ, ये सही बात है, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? मैम उसका एम्प्लॉय रेफरल मतलब मैम होता है कि उसके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अपने किसी फ्रेंड या फिर ब्रदर को वो चाहे, मतलब वो अगर जॉब करना चाहता है, वो एलिजिबल है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट बताओ क्या होता है, ये तो सही बताया रोहित ने भी, आदित्य ने भी। Now tell me what is the concept? Why does employee referral hold an importance when we talk about internal recruitment? मैम ये बिलीव होता है कि वो अच्छा एम्प्लॉय लेकर के आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से वो बता चुका होगा उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब हम एम्प्लॉय रेफरल की बात करते हैं, सी टेक माय एग्जांपल, when I'm teaching in CIMAGE, I'm an employee of this organization. सपोज करो कि कल को कोई रिक्रूटमेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक फैकल्टी का का पोजीशन खाली है, ठीक है? और ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग रेफर कर सकते हैं किसी अपने फ्रेंड, रिलेटिव, किसी को भी उस पोजीशन को फिल करने के लिए। हम अगर किसी को बोलेंगे कि इस सब्जेक्ट का, सपोज वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज आल्सो टीचिंग एंड शी इज teaching the same subject of which the requirement is there in CIMAGE. जब हम उसको रेफर करेंगे या हम बोलेंगे कि आर यू विलिंग टू वर्क इन CIMAGE, क्या वो मुझसे ये नहीं पूछेगी कि, या पूछेगा कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है? पूछेगा? क्या वो मुझसे नहीं पूछेगा कि यहाँ पर सैलरी कैसी है? The person will also ask me what is the how is the work pressure in the organization. The person will also ask me what is expected of a faculty in the organization, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं चलती, राइट? जब उसको हम ये बातें और इससे जुड़ी हुई और 10 बातें वो जरूर पूछेगा इस ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले, क्योंकि हम उसको एम्प्लॉय रेफरल की तरह रेफर कर रहे हैं। जब हम उसको रेफर कर रहे हैं और जब हम उसको इतनी बात बता देंगे, there are fair chances and it is presumed that I have transferred a part of organizational culture to the person who has not even joined the organization. समझ में आ रही है बात? किसी को कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछना। Say yes ma'am, no ma'am, anything. मैम रिपीट एक बार। What is the we are discussing what is the relevance of employee referral as a method of internal recruitment in an organization. I gave you my example. Understand it from this point of view. I am working in CIMAGE, so I'm an employee of CIMAGE. Say for example tomorrow a vacancy comes in the organization CIMAGE of a teacher, and the management asks us that if you have anyone who teaches the same subject and so is the eligibility criteria, and if the eligibility criteria matches, you can refer that friend or relative to us. Okay, now
suppose I have a friend who teaches the same subject of whose vacancy is there in the CIMAGE. When I refer or when I even ask my friend that do you want to join CIMAGE, my friend as a teacher will ask me 100 questions about CIMAGE. And I'll also inform her or him beforehand what is expected of you in the organization, what are your roles and responsibilities in the organization, what duties you need to discharge mandatorily in the organization. Okay. What is that you need to take care apart from studying? How is the work culture? What are the provisions of leave? What are the other facilities? What are the facilities not given? Everything, pros and cons. Since that person is my relative, so I'll be very honest to that person. Okay. Do you think that this way what's happening? I am transferring a part of organizational culture of which I am a part to the person who has not even joined the organization. Right? वो तो पहले से जान गया कि यहाँ पर वर्क कल्चर कैसा है. तो साइकोलॉजिकली ये माना जाता है कि that person is ready, making up his or her mind, ready to work in the organization in a better way than some strange person from external recruitment. You should know this कि private organizations में more than 50% of the employees are through employee referral. Government organization में ऐसा खास नहीं है, but private organization में more than 50% of recruitment takes place through employee referral. I'll give you one example. TCS is the company, you all know that. Tata Consultancy Services, dealing in IT, one of the biggest IT firms in India. It has a platform called TCS Buddy. Okay? Buddy means friend. TCS Buddy. उस TCS Buddy पे you as an employee of TCS can make profile of your friend and family or whoever whose profile you think can match with the skill sets required by this organization. Okay? अगर वो प्रोफाइल सिलेक्ट होता है, अगर TCS आपके रेफर किए हुए प्रोफाइल को सिलेक्ट करती है तो आपको कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है उसके लिए कि आपका एम्प्लॉय सिलेक्ट होके आया है. Your reward is just a reward is given to you, which is known as, normally it is called finder's piece. मतलब you have helped them find a person, a suitable match for the organization. So here is your part of reward. 5,000 ऐसे कुछ दिया जाता है. समझ में आया इंटरनल रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉय रेफरल का क्या वैल्यू होता है और क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This was all about recruitment, and there are also factors which influence recruitment, जैसे skill sets available, demand and supply of labor, your location, all these things. Demand ज़्यादा होगा तो ज़्यादा demand होगा, अगर और सप्लाई कम है तो वेजेस बढ़ेगा, and vice versa. Okay. Now, external recruitment का देखो एक और फायदा होता है. You know reservation system. Yes, ma'am. Our constitution says or considers reservation as a positive discrimination in the constitution. Okay? एक उसको reservation system को एक positive discrimination माना गया है, which is important for equitable growth of the society. जब आप internal recruitment करते हैं तो reservation system fulfill नहीं होता है ना? आप कभी भी किसी का एडवर्टाइजमेंट आज ही जा करके एडवर्टाइजमेंट खोल के देखना, किसी का भी रैंडमली डाउनलोड कर लो गूगल से, किसी का भी रिक्रूटमेंट, उसमें अगर 10 सीट है तो वो ये निकाल के देंगे कि जनरल के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कितना है. आपको कंसेशन इस बात पे भी दिया जाता है कि आप किसी स्पेशल लैंड से बिलोंग करते हैं, यू आर द
सन ऑफ सॉइल्स जिसको हम कहते हैं, जैसे बिहार गवर्नमेंट में बीपीएससी में विमेन को आरक्षण है, अब वो विमेन किसी भी कैटेगरी की है। ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट कॉम्प्लायंस होती हैं, ये सारी चीजें जो लीगल कॉम्प्लायंस होती हैं, इन लीगल कॉम्प्लायंस को भी हेल्प करता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, which completely fails in case of internal recruitment. Understood? अब बोलो, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? Any doubt since this was a revision class? और अगला टॉपिक बता दो, क्या रिवीजन करना है तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में? एंड प्लीज कम प्रिपेयर्ड, ऐसे बैठ के सत्यनारायण की कथा के जैसे नहीं सुनना है। पार्टिसिपेट कीजिए, जितना सुनिएगा, जितना क्वेश्चन करिएगा, उतना ही डाउट क्लियर होगा, और फिर आपको बुक की जरूरत नहीं होगी, यू कैन राइट ऑन योर ओन। क्या पढ़ोगे इस क्लास में? परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ोगे? ठीक है, यस मैम। यस मैम, परफॉर्मेंस आपकी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।